Students, today we will discuss question answer chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Question first. What could be some of the reasons of the migration of people from villages to cities? हम लोगों ने लेसन में देखा था कि बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू सिटीज़, कि गांव से सिटीज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है. आंसर इज पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ लाइवहुड. देयर फील्ड fail to provide them means of survival. Cities provide employment, jobs और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड. कि जो लोग हैं वो शहर जो विलेज की लाइफ छोड़ के सिटी की तरफ सर्च ऑफ लाइवहुड, अपने जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके लिए जा रहे थे, क्योंकि वो फेल हो गए थे. उनके जो फील्ड्स थे उनमें इतना खाना नहीं हो पाता था कि वो सरवाइव कर सके. और सिटीज़ में है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और जो रोज़गार है और उनके काम है और वो ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं. द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ द पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेंबर्स. सर्वाइवल इज़ द प्राइमरी कंसर्न्स. और इस तरह से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, अपने सर्वाइव कर सके और भूख से ना मरे, इसलिए वो लोग विलेजेस टू सिटी की तरफ जा रहे थे. Would you agree that promise made to poor children are rarely kept? Why do you think this happened in the incident narrated in the text? So answer is the promises made to the poor are rarely kept. The author asks Sahib half joking whether he will come to her school if she starts one. Sahib agrees to do. होता है ना, लेसन में देखा था हमने कि वो उससे जोक करता है कि अगर तुम स्कूल बनाओगी तो मैं वहाँ पे पढ़ने आऊँगा. इस तरह वो लोग जोक करते. ए फ्यू डेज लेटर ही आस्क इफ़ द स्कूल इज़ रेडी. अगर कुछ दिनों बाद पूछते हैं कि अगर स्कूल रेडी हो गया हो तो. द राइटर फील्स एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन प्रोमिस लाइक हियर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड. अब जो उससे फिर आगे पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया, तो बाद में वो उसको थोड़ी सी शेम फील होती है ऑथर को, और क्योंकि इस टाइप के प्रॉमिस है वो इस ब्लैक वर्ल्ड में होते ही रहते हैं. थर्ड, व्हाट फोर्सेस conspire to keep the workers in the Bengal industries of Firozabad in poverty? Answer is certain forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty. These include the moneylenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats एंड द पॉलिटिशियन. ये सब है. ये बेंगल्स जो इंडस्ट्री लोगों ने फिरोजाबाद में चालू कर रखी है, ये सब लोग उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं. टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आंसर इज स्टूडेंट्स, इस लेसन की लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल है, तो मुझे लगता है आई हैव नो नीड कि इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए. फाइन. आंसर इज मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद. यू अंडरस्टैंड? मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, बट Mukesh is an expectation. He has the capacity to take courage and break from the traditional family occupation. He has strong willpower also. He does not want to be a pawn in the hands of the middlemen or moneylenders. He insists on being his own master by becoming ए मोटर मैकेनिक. यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है.
He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. He will have to overcome many hurdles before he succeeds. Then comes trans- transport problem. Money is the first one. He will have to earn some money himself. The garage is a long way from his home. He will have to cover it twice every day, anyhow, by walking on foot. Patience, hard work, firm will, and the determination to learn will help him realize his dream. Next long question. Mention the hazards of working in the glass Bengal industries. Hazards means होता है difficulties, dangers. The glass Bengals industry has many health hazards. It usually employs small children. It is illegal to employ very young children in hazardous industries, but certain forces like middlemen, moneylenders, police and politicians combine to entrap the poor workers. Let's first consider the places where Bengal maker work. It is a cottage industry. They work in the glass furnaces with high temperatures. The dingy cells are without air and light. Boys and girls work hard during day next to lines of flamest of flickering oil lamp. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Glass blowing, welding and soldering pieces of glass are all health hazards. Even the dust from polishing the glass of Bengals adversely affects the eyes, and even adults go blind. Thus the surroundings, prevailing conditions and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. Last question. Why should child labor be eliminated and how? It's very important questions. Child labor should be eliminated because the children employed at tender as domestic servants, dishwashers, at roadside dhabas and in hazardous industries making glass bangles, rice, crackers, etc. lose the charm of the spring of their life. Their childhood is stolen, burdened by the responsibility of work. They become adult too soon. Most of them are undernourished, ill-fed, uneducated and poor. They have a stunt growth. Child labor can be eliminated only through concerted efforts on the part of government agencies, NGOs, non-government organizations, cooperative societies and political leaders. Mere passing of law will not help. Laws should be enacted faithfully. The children thrown out of work should be rehabilitated and given proper food, clothes, education and pocket money. Their feelings, thought and emotion should be respected. Let them enjoy sunshine and fresh air.